तो हेलो वेलकम। आज हम देखेंगे कि एनपीटीएल का जो इथिकल हैकिंग कोर्स है उसका वीक 1 असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग मॉडल्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क इज गिवन टू द टेस्टर। सो इसका आंसर चल हो जाएगा ब्लैक बॉक्स मॉडल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा कि देखो, व्हाइट बॉक्स मॉडल में क्या होगा, द टेस्टर हैज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क. In the black box model, the tester does not have any information about the network. And gray box model is somewhere in between, where the tester is only provided with partial information about the network. Okay. And there is nothing about the red box model. Okay. So red box model कुछ होता नहीं है, only white box, black box and gray box. And white box जो मैंने बोला, ठीक है, टेस्टर हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ब्लैक बॉक्स में the tester does not have any information, okay, and gray box में partial information. So यहाँ पे दिया है कि the tester does not have the any information. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि कौन सा पेनिट्रेशन टेस्टिंग मॉडल में नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क इज गिवन टू द टेस्टर. सो ब्लैक बॉक्स मॉडल, सो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स मॉडल, ऑप्शन नंबर बी. Question number 2, which of the following statements is or are true for the circuit switched network? यहाँ पे सॉल्यूशन है, okay? यहाँ पे ओनली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रू. सर्किट स्विचिंग में a communication link is dedicated to a connection and cannot be shared with other connections. Okay? So इसका आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर बी. एंड ये जो है एक कम्युनिकेशन लिंक में भी शेयर्ड बाय मोर देन वन कनेक्शन, ये पैकेट स्विचिंग के लिए. एंड सी ऑप्शन आल्सो पैकेट स्विचिंग. ओके, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है कि इन ए सर्किट स्विच नेटवर्क a communication link remains dedicated to a connection. However, in a packet switch network, communication link may be shared by more than one connection. Also, in a packet switched network, packets between the same source and destination may follow different paths, and hence the packet transfer delay can vary with time. Whereas in circuit switch network, the link is dedicated, so most of the time the delay remains constant. So circuit switched network is acceptable for voice communication, but is very inefficient for high traffic like data stream. So सर्किट स्विचिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी ओनली ट्रू. Which of the following statement is or are false for virtual circuit based packet transfer approach? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी. The intermediate node can perform dynamic routing, ये false है. And D option, that is it is true for packet switch network, ये भी false है. So इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगा कि virtual circuit approach is a connection oriented packet switching approach where a route is established before packet transmission starts. So for a session starts, the packets follows the same path, and then once the session is expired, a new route is established. In virtual circuits, a virtual ID is used, which is used by intermediate node of the route, so that the packet can forward it to the next node. So this means that the intermediate nodes can only forward the packet and cannot make dynamic routing decisions. So in virtual circuit, all packets is in order to the destination as packet follows the same path. So it is not a true packet switch network as it uses a fixed path for transmitting the data. So यहाँ पे virtual circuit के लिए ऑप्शन बी एंड डी फॉल्स है. तो यहाँ पे cannot perform dynamic routing and cannot do packet switch network. So यहाँ पे बी डी फॉल्स हो गया, एंड यहाँ पे
it is a connection oriented approach where a route is established prior to transfer of packets. ये true है. अब हम डिस्क्रिप्शन में हम देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखें अब एंड ऑल द पैकेट्स रीच इन ऑर्डर टू द डेस्टिनेशन. ये भी ट्रू है. सो ऑप्शन बी एंड डी फॉल्स. Question 4 is numerical question. A packet of size 2000 bytes is sent over a 50 kbps, that is kilobits per second, point to point link, whose propagation delay is 5 milliseconds. So the packet will reach the destination after 5 milliseconds. Assume 1k is equal to 1000. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगा कि to determine the total time in milliseconds for a packet to reach the destination, we need to calculate both the transmission delay and the propagation delay. So number one, transmission delay. Transmission delay is the time taken to put all the bits of the packet onto the link. So the packet size is equal to 2000 bytes equal to 2000 into 8 bits is equal to 16,000 bits. So transmission rate is equal to 50 kbps equal to 50,000 bits per second. So transmission delay is calculated as packet size divided by transmission rate. So 16,000 bits divided by 50,000 bits per second is equal to our calculation for 0.32 seconds. So converting 0.32 seconds to milliseconds, that is 0.32 seconds into 1000 milliseconds divided by second is equal to 320 milliseconds. So propagation delay क्या हो जाएगा? Propagation delay is the time it takes for a signal to travel from the sender to the receiver. So given propagation delay, that is TP, is equal to 5 milliseconds. So total delay कितना हो जाएगा? The total delay T is the sum of the transmission delay and the propagation delay. So T is equal to T plus TP, that is 320 milliseconds plus 5 milliseconds is equal to 325 milliseconds. So therefore the packet will be reached destination after 325 milliseconds. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 325 milliseconds. 325 milliseconds. Then question number 5. Which of the following ways a layer is responsible for end-to-end reliable data transfer? That is transport layer. Option number B. So यहाँ पे the physical layer is responsible for actual transmission of signal over a communication medium. Data link layer is responsible for transmitting data frames reliable over a point-to-point links. The network layer is responsible for the switching or routing packets from one node to next node to the final destination. Then the transport layer is a virtual host-to-host layer between the two end systems, which is responsible for end-to-end reliable data transfer. Which error recovery and flow control. The session layer manages connection sessions. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए पूछा था, यहाँ पे एंड टू एंड रिलायबल डाटा ट्रांसफर के बारे में पूछा था, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑप्शन नंबर बी. और यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन है. ओके, बोथ भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statement is true for IP address? Actually, for the IP address, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. It uniquely identifies a network interface of a computer system. And option number B, it uniquely identifies a host in the network. दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी. Because IP addresses are used to route traffic to specific devices on a network and identify them for communication. Question number 7. How many bits are used for IP address in IPv4 and port number respectively? तो IPv4 के लिए 32 and port number के लिए 16. That is 32 and 16. Option number B. So 32 bits are used for IP address, whereas 16 bits are used for port number. So option number B, 32 and 16. Then question number 8. Which of the following is not a valid port number in TCP/IP? So clearly is the solution. In TCP/IP, port number are 16-bit quantities with values in the range of 0 to 2 to the 16 minus 1. So
2 पर 16 हो जाएगा 65536 माइनस 1 दैट इज 65535। तो यहाँ इस रेंज में कौन सा नहीं है? इसका रेंज में ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी भी जाएगा, ई नहीं जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ई नॉट ए वैलिड पोर्ट नंबर इन टीसीपी टाइप। Question number 9. If the header is 224 bits long, what will be the value of header length fields in decimal? So the header length field contains the size of the IP header in multiples of 32 bits or 4 bytes. Here size of the IP header is equal to 240 bits equal to कितना हो जाएगा? 32 multiply means 7 into 32, 7 into 32 that is 224. Okay. सो 224 बिट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना मल्टीपल हो जाएगा मींस 32 into 7. So hence header length will contain that is 0 1 1 1 which is the binary equivalent of the number 7. तो इसका आंसर हो जाएगा 7. Then number of then question number 10, the minimum size of the IP header required in an IP datagram is dash bytes. Simple question 20 bytes. यहाँ पे IPv4 datagram header size of the header is 20 minimum and 60 bytes maximum. So IPv4 datagram में जो header size होता है तो header का 20 हो जाएगा मिनिमम, 60 bytes हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मिनिमम साइज ऑफ द IP header, तो यहाँ पे 20 bytes, मिनिमम के लिए 20 bytes और मैक्सिमम पूछता तो 60 bytes। मिनिमम 20 bytes और मैक्सिमम पूछता है तो 60 bytes। फिर से मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, यस। क्वेश्चन नंबर 2 का ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 3 बी डी, क्वेश्चन नंबर 3 बी डी, यस। क्वेश्चन नंबर 4 325, क्वेश्चन नंबर 5 बी, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी, क्वेश्चन नंबर 7 बी, क्वेश्चन नंबर 8 ई, क्वेश्चन नंबर 9 7 and question number 10 that is 20. That's on it. So your answer are successfully submitted. Submit हो चुका है। Thank you. Next video में कोई तो देखेंगे।